हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल गिरीश नर्सिंग एजुकेशन पुणी गोटे नुआ टॉपिक सहित आप वेलकम करछि कि आपण माने जानिथिबे कि अपकमिंग एग्जामिनेशन हम बहुत बहुत 3 मास भीतर बाहर तो बी प्रिपेयर तो कंटिन्यू क्लासटा रोचे आपण माने देखि पारिबे। तो आज हम डिस्कशन करबा जहाँकि हम अपकमिंग एग्जाम सब 5000 ओटीपीसी नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ पे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा जाउछि। तो वीडियो जमा भी स्किप करेंगे नहीं। आज हम डिस्कशन टॉप 15 एमसीक्यू रिगार्डिंग सीवीए स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक मोस्ट जोटा मोस्ट एग्जाम में कौन रिपीटेड होची मोस्ट। तो वीडियो जमार भी स्किप करेंगे नहीं मु एक्सप्लेनेशन से आपण मानकु कहबी। तो लेट्स को स्टार्ट करछि। नंबर 1 क्वेश्चन जीवा देखंतु। नंबर 1 क्वेश्चन कौन कहूची ना ए पेशेंट देखंतु ए पेशेंट विथ एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक अराइव विद इन 2 आवर व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन। तो क्वेश्चन कहला गोटे पेशेंट आसी एक्यूट इस्केमिक हेती विद इन केते 2 आवर भितरे। तो फास्ट प्रायोरिटी आमे कोन देबा एरी एस्पिरिन इमीडिएटली आईवी थ्रोम्बोलाइसिस आफ्टर एलिजिबिलिटी असेसमेंट हेपारिन इन्फ्यूजन और मानिटल कौन करवा ना सब बेले देखी मन रखिए कि एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक रे कौन हुए आम एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक रे कौन होता है कि आमर जिते भी जेकोसी गोटे कौन ब्लड क्लट ठीक अच्छे ब्लड क्लटटा कौन हुए ब्लड क्लट किंबा नेरो कहते हैं कौन ब्लकेज करता है नेरो हेबा फल कौन हुए ब्लकेज हुए आमर आर्टेरी जहाँ फल कौन हुए ब्रेन सेल को कौन ठीक टाइम रे कौन ऑक्सीजन सफिशिएंट परिमाण आमको जोगाई पार न था जहाँ फल कौन टिश्यू डेथ होता है और ब्रेन सेल डैमेज होता है ठीक अच्छे तार से कौन देखा जाए आम कौन कही ना आम एक्यूट इस्केमिक ठीक अच्छे इस्केमिक ब्लड क्लट एवं नेरो करता है गोटे आर्टरी को जहाँ फल ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट आम ऑक्सीजन पहुँची पारने जहाँ फल ब्रेन सेलटा आम डैमेज होता है। और तार साइन सिम्पटम देखो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ आसची बहुत सारा एग्जाम तार साइन सिम्पटम मोस्ट इमीडिएट साइन सिम्पटम हूँ कौन नंबर रखापी फास्ट माने कौन हुए साइन सिम्पटम ना आमर फेस ड्रॉपिंग ए आमर आर्म वीकनेस देन एस रे आम कौन स्पीच डिफिकल्टी देन टी रे आमर टाइम टू कॉल इमरजेंसी सर्विस ठीक अच्छे ये मोस्ट इंपोर्टेंट आमर कौन एक्यूट इस्केमिक कौन साइन सिम्पटम फास्ट फेस ड्रॉपिंग हम आर्म वीकनेस स्पीच डिफिकल्टी एंड टाइम ठीक अच्छे क्वेश्चन को। तो ये कौन हो आंसरटा आमर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आईवी थ्रोम्बोलाइसिस आफ्टर इनिशियल असेसमेंट और एलिजिबिलिटी असेसमेंट कौन पे करवा आईवी थ्रोम्बोलिस जिते आईवी थ्रोम्बोलिस आम करवा कौन होता है ना आईवी थ्रोम्बोलिस 2 कौन हो जिते भी जहाँ भी गोटे ब्लड क्लट थी कौन से कौन डिजल्व होता है से आम फास्ट प्रायोरिटी वीकेन जेहेतु आम ब्लड क्लट हवा फल इस्केमिक देखा जाए से ब्लड क्लट को आम रिमूव करवा तो रिमूव तो करहबनी फास्ट आम कौन डिजल्व करवा मिसेवा जहाँपर ऑक्सीजन मात्रा आम ब्रेन को ठीक से पहुँची पार। तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ए स्ट्रोक कॉजिंग contralateral face and arm weakness को आर्टरी मोस्ट कॉमनली देखा जाए स्ट्रोक रे आम contralateral फेस एवं आर्म को ना एसीए पीसीए एमसीए बिफिलरी आर्टरी एसीए माने कौन ना एसीए होची एंटीरियर
सेरिब्राल आर्टेरी ठीक अच्छे पीसीए माने पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टेरी एमसीए मिडिल सेरिब्रल आर्टेरी एंड द करेक्ट आंसर होची कौन ना एमसीए कौन मिडिल सेरिब्रल आर्टेरी कौन देखा जाए जदि स्ट्रोक हेबो ताहले कौन देखि जे हमर कंटा लेटरल ऑफ फेस एंड आर्म तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देखो तो ये कहला द फास्ट एक्रोनिम फॉर स्ट्रोक रिकॉग्निशन इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट तो नंबर 1 क्वेश्चन आपन डिस्कस करथिनी कि हमर एक्यूट इस्चेमिक रे कौन हुए तार साइंस शिफ्ट कौन फास्ट तो मान को मध्य कोटा फास्ट रो साइंस सिम्पटम कोटा गोटे छाड़ी की ये गला फेस ड्रॉपिंग आर्म वीकनेस स्पीच डिफिकल्टी एंड टेम्परेचर राइज कौन आमर टेम्परेचर राइज को छाड़ी की कौन फेस आर्म वीकनेस स्पीच डिफिकल्टी एवं आमर टाइम नॉट टेम्परेचर तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन आसबे आम क्वेश्चन नंबर 4 ए क्लासिक ईसीजी इंडिकेट विथ एक्यूट स्टीम आई तो देखो STEMI जदि थी ये आम बुझीजा STEMI मीन्स कौन ना आमर ST हूँ कौन ST सेगमेंट तो ये हुए कौन ना आमर ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ठीक अच्छे तो ए क्लासिकल फाइंडिंग एक्यूट स्टीम कौन हम ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ST सेगमेंट इवैल्यूएशन तो क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहूँ ना द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक कौन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एज हाइपरटेंशन जेंडर और फैमिली हिस्ट्री कौन मॉडिफाइबल हूँ कौन हाइपरटेंशन तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहला ना व्हिच असेसमेंट स्केल इज कॉमनली यूज्ड टू क्वांटिफाई स्ट्रोक सिवियरिटी हमर स्ट्रोक केते सिवियरिटी अछि जेमिति हमर कोन कॉन्शियसनेस चेक करबा में को स्केल यूज करा हुए हमर ग्लासोस्कोमा स्केल ठीक अछि सेमिति गोटे हमर गोटे स्ट्रोक पेशेंट को स्केल हमर यूज हुए ना ग्लासोस्कोमा स्केल तो केबे भी हबनी अबगा स्कोर लगा नियोनेटल ब्रेडन स्केल ना हमर NIHSS कौन ना हमर NIHSS NIHSS माने कौन एन फॉर नेशनल नोट कर दिखाते समस्ते बहुत थोड़ा एग्जाम रे आछी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल तो जानिले कौन ना हमर NIHSS व्हिच इज मेजर फॉर हमर स्ट्रोक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 7 रे कौन कहूँ ना ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन शुड रिसीव व्हिच इन्वेस्टिगेशन विद इन द 10 मिनट ऑफ अराइवल जदि MI सस्पेक्ट करा होची तारे विथ इन 10 मिनट आम इंटरवल रे 10 मिनट जो पहुँची ताले फास्ट आम को टेस्ट करबा MI केस ना चेस्ट एक्सरे इकोकार्डियोग्राफी 12 लीड ECG और सीटी स्कैन कौन करबा आम ना हमर 12 लीड ECG इकोकार्डियो इनका नाम आम प्रथमे फास्ट प्रायोरिटी करिया द नेक्स्ट क्वेश्चन
which symptom is most strong suggest for posterior circular stroke कौन ना आमर isolated leg weakness vertigo with ataxia aphasia chest pain the correct answer is आमर vertigo with ataxia option B is the correct answer. Then come to the next question, question number 9. The target dot to needle time thrombolysis in an eligible stroke patient is less than 30 minutes, 60 minutes, less than 120 or less than 180 minutes, and the correct answer is less than 60 minutes. Then question number 10. Which marker is most specific for myocardial infarction? CK, LDS, troponin or AST? तो आंसर कौन हम ना आमर troponin. Then question number 11. In the hemorrhagic stroke initial imaging choice is कौन ना MRI with contrast, non-contrast CT scan or PT scan or cerebral angiography, and the correct answer is non-contrast CT brain. Option B is the correct answer. Then question number 12. Which drug classes reduce mortality after myocardial infarction with no contraindication exists? को क्लास ड्रग में नामर बेटा ब्लॉकर, एंटासिड, एंटीहिस्टामाइन और डाययूरेटिक और डाययूरेटिक कौन नामर बेटा ब्लॉकर. बेटा ब्लॉकर आमर कौन हुए ना बेटा ब्लॉक जिते बेले आम कौन एमआई केस बेटा ब्लॉक जो देवा कारण आम O2 टा आम कौन ऑक्सीजन लेवलटा कौन इम्प्रूव कर. Then question number 13. A patient develops sudden aphasia and right side weakness. Then the lesson mostly को region रे आमर देखा जीव ना right MCA, left MCA, right PCA और cerebellum. The correct answer is left MCA. Then question number 14. Which nursing action has highest priority acute stroke? Oral feeding, maintain airway and oxygen, ambulation, fluid restriction, and the correct answer is कौन ना airway breathing circulation जोटा हम कही था A B C. First priority in the highest in the stroke case हम कौन देखिए first हमारे airway breathing then circulation. Then question number 15. A patient with his stroke typically present with गोटे पेशेंट हिज स्ट्रोक होती टाइपिकल कौन प्रेजेंट रही है ना हाइपोथर्मिया, को टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस विथ सीएनएस डिस्फंक्शन, ब्राडिकार्डिया एंड पोलियो. जैसे हिज स्ट्रोक पेशेंट आसी मेन आप देखिए कौन बॉडी टेम्परेचर कौन बेसी रही हाइपरथर्मिया थी हाइपरथर्मिया विथ कौन आमर न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट देखा. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. तो आपण माने भिडियोटा केमती लागला कमेंट मते निश्चय जानबे. एपर आपण माने जदी हमर पेड क्लास जॉइन करिबा पे चाहउछंती ताहले ओनली 1499 आपण ऑल बुक नोट एवं इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास समस्त बेनिफिट पाई परिबे. तो नेक्स्ट क्लास में आपण मा डिस्कस करी पेडियाट्रिक नर्सिंग रो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यू ने के आस्ती बहुत ही जल्दी. तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू. जय जगन्नाथ.